Hello students, welcome to sort of class sir classes. This is the question from the gate 2026. Okay, so question दिया गया है. This is the question number 57. Okay, so question number 57, 2 marks section का question है. So given that z equals to this, that means z equals to x transpose ax, where x is x1, x2 and x3. Okay, such that एक तो कांस्टेंट इक्वेशन क्या दिया है x1 x2 x3 एंड दिस इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इज अ कांस्टेंट रिलेशन. तो हम लोग को z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. दिस प्रॉब्लम इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेली-ग्रेट्स थ्योरम. सो फर्स्ट हम लोग रेली-ग्रेट्स थ्योरम को स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैसे निकालते हैं. सो व्हाट इज से बाय द रेली-ग्रेट्स थ्योरम. पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखे रेली-ग्रेट्स थ्योरम. थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. रेली-ग्रेट्स थ्योरम फॉर a matrix, square matrix, for a matrix A belongs to our square matrix n cross n, the maximum value of the quadratic form, x transpose ax such that a constant भी 1 होगा. दिस इज द रेली-ग्रेट्स थ्योरम कंडीशन. such that a constant norm of x is 1. that means x1 square plus x2 square plus x3 square plus dot 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 xn square equals to 1. x1 square plus x2 square equals to 1 is, so for a matrix A R n cross n, the maximum value of the quadratic form x transpose ax is the maximum value of the quadratic form x transpose ax such that ये constant का इक्वेशन भी 1 ही होना चाहिए. तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू of the matrix the associative symmetric matrix A. So this is the रेली-ग्रेट्स theorem. and अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेली-ग्रेट्स theorem. तो यहाँ पर z क्या है देखिए x ट्रांसपोज x. तो इसका मैक्सिमम और देखिए कांस्टेंट इक्वेशन भी है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 व्हिच इज नथिंग बट अ नॉर्म ऑफ x2 इक्वल्स टू 1. ओके, सो z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. देयरफॉर z का मैक्सिमम वैल्यू होगा द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A. तो ये मैट्रिक्स क्या दिया गया है. मैट्रिक्स A इज 2 0 0 0 2 1 0 1 2. ओके, सो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम अच्छे से नोटिस करेंगे तो इसको पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का जरूरत भी नहीं है. दिस इज 0 0, so इज अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स. सो ऊपर वाला ब्लॉक का आइगन वैल्यू होगा 2 और नीचे वाला ब्लॉक इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 2 1 1 2. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा. एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स विच इज 4x प्लस द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विच इज 3. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो इसको हम लोग अगर मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो x equals to 1 comma 3. So all the eigenvalues of the matrix A, all the eigenvalues of the matrix A is therefore eigenvalues of A are क्या क्या eigenvalue मिला हम लोग को 1 2 and 3. So the largest among them is 3. The largest
eigenvalue, the largest eigenvalue कौन सा है 3. So the maximum value of the z is, this is the maximum value of the z. So maximum value of the z is 3. So this is the answer. So this problem is a direct application of the Rayleigh-Grades theorem. Okay, thank you.